कुछ नशा है तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराए हर स्वरूप ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ भोपाल। We are happy to see Madam Rani Dange, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region, Mr. Aditya Sharma, Administrative Officer, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region, and Ms. Akandi, Principal of the Vidyalaya, to welcome Honorable Shri Saurabh Srivastava sir, our Chief Guest, Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region, by presenting a sapling. विद्यालय का हर कोना प्रस्फुटित है, प्रसन्न है आप सभी की उपस्थिति से। Mrs. Rani Dange always eagerly wait for you. Your presence itself accelerates the momentum of the occasion. Most welcome, ma'am. To please welcome Mr. Aditya Sharma, Administrative Officer, यथा नाम तथा गुण सूरज हूँ मैं रमक छोड़ जाऊंगा, आपके गुणों का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मैं आकृति शर्मा मैडम, डायनामिक अग्रवाल मैम, आकृति अग्रवाल मैम, डायनामिक यंग फाइनेंस ऑफिसर। तो चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं आज का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कुछ हृदय से कुछ पंक्तियां आई, उन्हें कहता हूँ कि लिखा है शहीदों ने कबूल से और बलिदान देकर नाम तेरा रूप निभाया है असत्यों का सर्वप्रथम हम कार्यक्रम के प्रारंभ में पहले कलम करेंगे। तो मैं आदरणीय हमारे केंद्रीय विद्यालय भोपाल के प्रदेश से है। आइए
आइए आइए आइए आप लोग ये है सर जो अनडिवाइडेड इंडिया है। हम कर रहे हैं आजादी के दैदीप्यमान जो सारे हैं उनका भारतीय पहले के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहा है, उसमें जो बहुत आज सारे के डेट में पाकिस्तान या बांग्लादेश आज इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम उनको पुनः देख रहे हैं। हमारे हर एक छोटे छोटे गांव नगर शहरों से हमने बहुत सारे बंगाल के काफी थे ना। आज़ादी की क्षमा तो वहीं से बंगाल से What Bengal thinks today, India will think. ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है और केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित सभी विद्यालय पूरे जोश के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। और आज ये गणतंत्र दिवस का आयोजन यहाँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल के परिसर में किया गया है। और इस पूरे वर्ष हमने बहुत से कार्यक्रम किए और इसमें हमने आज़ादी के उन नायकों के बारे में जिनके बारे में कंटेम्प्रेरी मीडिया में कम लिखा गया या उनके बारे में कम सूचना उपलब्ध है, उन लोगों को हमने इतिहास के पन्नों से निकाला, उनके योगदान को बच्चों को लगाया कि उनके योगदान के बारे में आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी करें। और इकट्ठी करके हमने एक पूरा सीरीज़ ऑफ वेबिनार आयोजित किया और जिसमें अलग अलग उसके जो सेशन में उसमें अलग अलग नायकों के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके विशेष योगदान के बारे में जन जागरण फैलाया। और आज ये एक तरीके से उस कार्यक्रम का एक तरीके से औपचारिक रूप से उसको एक समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप सबने देखा कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर गैलरी बनाई है और जिस गैलरी में जिसमें भारत की आज़ादी के जो नायक थे, जो नायिकाएँ थीं, उन सब के योगदान को इसमें चिन्हित किया गया है, दिखाया गया है, ताकि हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है वो इनके योगदान से अपने आप को परिचित करें और उनको सराहें और उनके योगदान के प्रति एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करें कि इस देश की आज़ादी जो है सहज ही नहीं मिली है, इसके पीछे अनेक लोगों का बलिदान है, अनेक लोगों ने अपने स्वर्णिम भविष्य को ठुकराया और हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। तो इन सबको याद करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की भावी पीढ़ी जो है वो जिम्मेदार नागरिक बन सके। जवानों की चित्र प्रदर्शनी का आज़ादी के दैदीप्यमान दीपक, इन सभी के लिए हम केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से समस्त पधारे हुए अतिथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार की नूतन नूतन कार्यक्रम और श्री सौम्य श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय सारा भोपाल, आदरणीय श्रीमती रानी डागली, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय सारा भोपाल, हमारे बीच मौजूद केंद्रीय विद्यालय भोपाल संगठन की फाइनेंस ऑफिसर आकृति अग्रवाल है, केवीएस आर भोपाल से ही हमारे बीच मौजूद श्री आदित्य शर्मा, एडमिन ऑफिसर, केवीएस आर भोपाल के अन्य कर्मचारीगण, केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 1 के अभिभावक, शिक्षक साथी, कर्मचारीगण, विशेष रूप से स्वागत अभिभावकों का जो आज अपने बच्चों के साथ हमारे इस विद्यालय में मौजूद हैं और इस विद्यालय की आधार
शिला कहे जाने वाले विद्यार्थी, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल परिवार की ओर से आप सभी का आज के मुख्य अतिथि तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाली डॉक्टर श्रीमती जीपी सिंह मैम, AIWC अखिल भारतीय महिला परिषद के विभिन्न सदस्यों का, पदाधिकारियों का तथा YouTube से जुड़ने वाले अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह आज का कार्यक्रम वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से विद्यालय संचालित किया जा रहा है, कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उसी का ही एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करता है। हाइब्रिड रूप में ये चल रहा है, जहां पर आप देखेंगे ये कार्यक्रम फिजिकली कुछ एक्टिविटीज होंगी और कुछ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं बस आज के इस गणतंत्र दिवस पर 3 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप उस पर चिंतन करें, सोचें, ध्यान करें और हमें इस भारत को विश्व गुरु जो बनाना है उसमें हम कैसे योगदान कर सकें। तो पहला मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मुझे लगता है कि भारत के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें एक और अन्य क्रांति जोड़ी जानी चाहिए, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। जो मेरे मैनेजमेंट के साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो जरूर इसको याद करेंगे क्योंकि फेडरल विल्सन टेलर ने इस टर्म को क्रिएट किया था और ये क्रांति इस बात को लेकर है कि आप कितने सामंजस्य के साथ, कितनी एक रूपता के साथ अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं। आप कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को बदल सकते हैं। सामान्यतः अगर आप देखें कि प्रोडक्टिविटी की बात करें या आउटपुट की बात करें तो जापान का उदाहरण बहुत अच्छा सामने निकल के सभी के अंदर काम करने की इच्छा जागृत हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान जाए। मैं भी मैनेजर, मतलब मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने काम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी उठाना है। आइडियाज एंड इनोवेशन, जब तक हम नया नहीं सोचेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये कहना चाहूंगी, हमें चिंतामणि की जरूरत नहीं है, हमें विघ्न विनाशक की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू मिसेस प्रज्ञा पांडे एंड मिसेस रूपा। धन्यवाद मंत्री मैम। भरत भूषण, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद निराला आदि ऐसे कई हिंदी साहित्य जगत में हस्ताक्षर हुए जिन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से जन जागृति को प्रखर एवं मुखरित बनाया है। आज हम इन्हीं भावों को प्रणाम करते हुए अपने तेजोमय ऊर्जित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो आइए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल के काव्य हृदयी विद्यार्थियों के द्वारा काव्य पाठ का रस लेते हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल के विद्यार्थियों को, भावी कवियों को। थी झांसी की दीवानी, वो झांसी की सेनानी जिसने हार कभी
मिला लेना। विकट संकट राह में कंटक, विकट संकट राह में कंटक, तपिश से जूझना सीख जाना। देश का हाथ थाम कर अब तो माँ भारती का शीश गगन लहरा जाना। दूर न होना, अधीर न होना, दूर न होना, अधीर न होना, डरना न अत्याचार से। आओ मिलकर करते हैं हम सब देश मंथन की एक नई शुरुआत से। आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, जनगण मन सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की अलख जलाएं, भारत भूमि के स्वर्ण पताकाएं हम सब मिलकर लहराएं, गीता पुराण बाइबल की गौरव गाथा सबको सुनाएं, वीर भोग वसुंधरा की महिमा को सब मिलकर गाएं, शहीदों की पुण्य स्मृति में आओ सब मिलकर दीप जलाएं। आजाद सुभाष भगत सिंह बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते जाएं, नेहरू गांधी सावरकर की। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। परिश्रम, ईमानदारी एवं धैर्य के बल पर, परिश्रम, ईमानदारी एवं धैर्य के बल पर मार्ग की बाधाओं को चीरते जाना है। सबको साथ लेकर, सबको साथ लेकर विकास के पथ पर बढ़ते जाना है। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। गंगा जैसी बेटी और विंध्य जैसा बेटा हो, बन के भिखारी सिंधु चरणों में लेटा हो, शीश पे नगेश की दहकती जवानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है। अब देखिए कवि ने कितनी सुंदरता से हमारे राज्यों को जोड़ा है। अंग बंग मिथिला धरा है कामरूप की, केरल कलिंग आंध्र तमिल प्रदेश की, मध्य देश गुजरात महाराष्ट्र पावनी, उत्तर प्रदेश राजभूमि हरियाणवी, चंदन सा लिपटाला लाट कश्मीर हो, थाने दरवाजा खड़ा पंचनद वीर हो, दिल की धड़क जैसी दिल्ली की रवानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है। भोपाल संभाग के भोपाल स्थान के केंद्रीय विद्यालय समस्त जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, 2, 3 और बैरागढ़ बंगरसिया ये सभी हमारे साथ जुड़े हैं और इस आनंदोत्सव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसके लिए वे सभी साधुवाद के भागीदारी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम नायकों को योगदान को उजागर करने के लिए जिनके बारे में यथोचित नहीं लिखा गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग और अखिल भारतीय महिला परिषद नई दिल्ली के संयुक्त प्रयासों से वेबिनारों की एक श्रृंखला आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित की गई। इस अनुभव को स्थायित्व प्रदान करने के लिए परम आदरणीय श्री सोमित श्रीवास्तव सर, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के नेतृत्व और संरक्षण में एक पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। मैं आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सोमित श्रीवास्तव सर तथा श्रीमती रानी टांगे मैम तथा आदित्य शर्मा सर, मैम सुश्री आकृति अग्रवाल, आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पत्रिका के विमोचन के लिए मंच पर आने का विनम्र निवेदन आपसे है।
श्री सौरभ जेटली सर, प्राचार्य केवी नंबर 1 भोपाल। सर मैडम रानी डांगे, श्री आदित्य शर्मा सर, सुश्री आकृति अग्रवाल मैम, आप सभी से निवेदन है कि वे अपने कर कमरों से आज़ादी का अमृत महोत्सव पत्रिका का विमोचन कर अनुग्रहित करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव पत्रिका मूलतः गुमनाम वीरों और वीरांगनाओं, जन इतिहास, लोक नायक एवं उनकी शौर्य और प्रबंधन क्षमता को शब्दों की माला के रूप में पिरोया गया। Ma'am, on this auspicious occasion, it is our privilege to have you amongst us. With great pleasure, we would like to take the opportunity to request you to launch the school e-magazine. We have tried to bring up the exhilarating flashback events and achievements of the past year. During the session 2021-22, like every year, this year also, Kendriya Vidyalaya number 1 Bhopal has published its annual e-magazine, keeping in tune with the pandemic scenario. The students of Kendriya Vidyalaya number 1 Bhopal showcase their creative abilities through articles, poetry, and painting in this magazine. This magazine has been published under the able guidance and mentorship of Shri Saurabh Jetli sir, Principal KV number 1 Bhopal, and a team of editors. A big round of applause, please. Thank you, sir. Sir, this magazine serves as a forum for the expression of the literary and artistic skills of the students, besides highlighting the forays made by the school in the various competitions that the students participated in, the awards won by the students, the work done by the various clubs, to name a few. Sir, we would also request you to give away the certificates to the students who are selected in various nationals to participate in open nationals representing areas. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Taking response to come over to the stage. Sir, please. I request Rani Dani ma'am to felicitate the school girls captain Vipansha Nema. Please come onto the stage. Leadership is about taking responsibilities, not making excuses. Responsibility is demonstrated by actions and deeds, not by words. Thank you, sir. Thank you, ma'am. गण का अभिमान, अमर रहे भारत का विधान। तो आइए सुनते हैं कर्णप्रिय, मधुर एवं देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण समूह गीत।
भोपाल के संगीत शिक्षक श्री ईशान देव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वे यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे विनती है कि वे हम सभी जितने यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं एवं अतिथिगण हमारे उनको अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अभिभूत करें। कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के छात्र छात्राओं द्वारा समूह गान की प्रस्तुति के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। गाने के बोल हैं, आज़ादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के।
Ma'am D.P. Singh will be with us virtually. I'm sorry that I could not be present on the stage because of my illness. Today is a very auspicious day, our 73rd Republic Day. Though we became independent on 15th August 1944, but our Constitution came into being on 26th January 1950. The credit for drafting it goes to Dr. Ambedkar. I pay my respects to him. So far, All India Women's Conference is concerned, I would like to inform you that it is the largest women organization in India dedicated to the cause of the unprivileged children and women of the society who are economically and socially weak and underprivileged. Health, hygiene, legal rights, domestic violence are the key areas on which we work. Bhopal branch is working since 1982. It has a family counseling center also. It is started in 1992 and has brought peace and happiness in about 20,000 families. So far education is concerned, I would like to say that it is the cornerstone of life from where the journey in the quest of knowledge begins. It is a fundamental right of every individual to get their education, to get enriched in knowledge. Children, after completing their education in schools and colleges, move from this small area to the wider arena of life in the world. I would like to congratulate the administration of Kendriya Vidyalaya, as I know Kendriya Vidyalaya has played a tremendous role in enriching the mind, body and spirit of the students and also making them good citizens, very conscious about their duty. Our country is celebrating Azadi Ka Mahotsav on completing 75 years of independence. Due to this COVID, we with Kendriya Vidyalaya organized a number of webinars on unsung heroes of India's independence. These heroes sacrificed their precious lives fighting for independence of the country. Our salutations to these heroes. They had no selfish aim, but only freedom of the country from foreign rule. We celebrate India's freedom by remembering and glorifying the few known personalities like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Subhash Chandra Bose, Patel, Sardar Patel, Rani Lakshmibai, etc. But we forget to pay our tribute to thousands and thousands of brave heroes who died and sacrificed their precious lives for our country. Like Udham Singh, Bhagat Singh, etc. So many are there. They had no selfish aim or aim, but only one aim, that was independence and freedom. The collection of all the scripts of teachers and the collection of all the scripts of teachers and honor of these unsung heroes and arranging them in a book form or free form, it will be a permanent document to remind us of their bravery and sacrifice. I pay my regards and respect to these heroes
and assure them that their sacrifice will not be missed. I congratulate Shri and Jetli Ji for compiling it. In the end, I appeal to all my dear young boys and girls, you are the future of the country, a strong pillar of the nation. So be good, pledge to serve the country with your full might and main. I would like to end with a poem which I have composed in honor of these unsung heroes. आज तिरंगा लहराता अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के साथ। आजादी के लिए हमारी लंबी चढ़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राकृत कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष पटेल का प्यारा भारत देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़े रहे और वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ तो हमको याद रहे और कुछ यादों के पार है। आओ याद करें हम उन गुमनामी वीरों को, जिसने त्याग जीवन जिसने त्याग दिया लड़ते लड़ते इस भूमि। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल पीछे आके छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। But at the end, before I end this in this poll, I would like to express my hearty thanks and gratitude to Shri Somesh Devasthji and Shri Jetli for inviting me and also giving me an opportunity to say a few words. I really feel honored and honored. Thank you, Honorable D.P. Singh ma'am, for the inspiring. We are definitely going to abide by your inspiring words. अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री L.K. सोनी सर, प्रिंसिपल के.वी. राजगढ़ को कि वह इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने लोगों से धोए हैं, लोग बीज बोते उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्न निधियां भी उन्होंने जीवन में पाई थी, पर माँ के आंसू लख उन्होंने सब सरस फुहारे लौटा दी, पर माँ के आंसू लख उन्होंने सब सरस फुहारे लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती
की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चन ही तो फूल नहीं, वे निज मस्तक लेकर दौड़े। माँ के आंचल ही तो फूल नहीं, वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी वे गौरव गाथा लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उनके गुण गाया करता हूँ। हे अमर शहीदों की पूजा, एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीच अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। मस्तक देने वाली जमात पर वायुयुग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है। आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ रहते हैं। फिर भी एक बात सबको एक धागों में पिरोती है, वह है देश के लिए प्रेम। गणतंत्र दिवस पर हर किसी के मन में देश प्रेम जागता है, चाहे वो भौतिक रूप से दूरी क्यों ना हो। इसी श्रृंखला में केवी बैरागढ़ की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है समूह नृत्य। यह वर्चुअल माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है
सारे जग से न्यारी होगी केली तेरी फुलवारी, गंगा से अमृत छलकेगा साहस उच्च हिमालय से, जय विजय का स्वर गूंजित होगा मेरे ही विद्यालय से। इसी स्पिरिट के साथ हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अब प्रस्तुत है एक गीत। मिलकर नई कहानी
I will take it up. Respected Madam D.P. Singh, guest of honor of today's function, my colleague in the regional office, Madam Rani Dange, learned principal of KV1 Bhopal, Shri Saurabh Jetli ji, Aditya Sharma ji, Akriti Agarwal, IAS officer, learned teachers of KV1 Bhopal, and my dear and very brilliant and bright students of KV1, and many other students who are connected with all of us through virtual media. First of all, I extend my heartfelt greetings and good wishes on 73rd Republic Day, and we all members of Kendriya Vidyalaya Sangathan join with the rest of India in celebrating Republic Day. You all know that on this day in the year 1950, the Constitution of India, the full provisions of the Constitution of India came into force. The Constitution of India, which was adopted on 26th of November 1949 by the Constituent Assembly. With the adoption of the Constitution, some provisions came into force immediately, but most other provisions, constitutional provisions, came into force on this very day. And from this day onwards, that is 26th of January 1950 onwards, India became Republic. Until then, from 1947 until 26th of January 1950, we were a dominion under British Crown. We were still, in technical sense, a slave nation of British Crown. But on 26th of January 1950, we became a true republic. Republic is a place where the ownership of that place or of that nation lies with the people of India. You all must have read that democracy is actually a country, democracy is a political system for the people, of the people, and by the people. So India, since we are a democratic nation, so we are for the people, of the people, and by the people. The political system of this country belongs to people, for the welfare of people, and dedicated for the welfare of people of India, elected by the people of India, committed to the welfare of people of India. This political system is enforced in India. Now, this democratic process, which began in 1950 or even before that, it has to be strengthened through such opportunities. So whenever we celebrate Republic Day or Independence Day, it is also an occasion for all of us to ponder how far we have succeeded in deepening the democratic process. To what extent we have succeeded. What distance we have covered in deepening of democratic process, where we are at the moment, and how far we need to go ahead. So I hope that this occasion will serve as a primer to all of us to think deeply of democratic process. We all are operating in different fields of thoughts and action. And everyone
however small role that we might be playing, but we have our own world of thought and action. Every student, every teacher, every person has a small world of thoughts and action. And in that world of thoughts of action, to what extent we are democratic. And what an ideal way of practicing democracy than a classroom. To what extent a teacher is a democratic teacher. To what extent he or she accommodates the views of his students, the needs and aspirations of his or her students. So occasions such as these should provide all of us an opportunity to think deeply on this line. Dear friends, you all know that the technology and the scientific advancements in the last century, over the last century, and in more recent times, the pace of advancement is actually demolishing all narrow boundaries, the boundaries of nations. They are also, in some sense, now they are crumbling. And the world is slowly but surely moving towards what is called a world culture. Now very soon we will have a world culture. As the scientific advancements and technological advancements, as they deepen further, very soon this deepening of technological and scientific advancements and scientific strides, they will propel all native cultures to fuse into what is called world culture. It would be very difficult for native cultures to survive in world culture if they are not scientific, if they are not logical, if they fail the test of logic and rationality. Such native cultures will not survive. And we have seen, if you see historical milestones, history milestones, you will see that such cultures which were founded on unscientific principles, they have not survived. Many civilizations are now part of museums. But how India has survived? कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी. What has made us survive? The reason is the foundation of India. The foundational strength of this country, which actually rests on the scriptures of India. Our strength originates from scriptures, not on other things. India was never politically, if you go into history, politically we were different, we were ruled by different kings. Even when British left us, there were more than 500 kings. But what united the whole of India? It is the scriptural strength that united the whole of India. Our mythology, if you see Ramayana and Mahabharata, the characters of Ramayana, they are more or less same from extreme north to extreme south. Today, almost in every part of India, you will see the stories of Ramayana, the stories and the characters of Mahabharata. They are played and celebrated in the entire country, be it north, south, east or west. So it is this strength, it is this feature of India which actually united the whole of India. Not politically, but culturally. So culturally, we were a great nation. We were one nation. Since time immemorial, we were one nation. Politically, no, we were not. But culturally, we were one nation. And the cultural foundation of India rests in its mythology, in its scriptural strength.
So dear teachers and students, you ought to understand what is the secret of India's strength. There are many scaring tendencies, and sometimes we get scared, and sometimes people get alarmed. There are many alarmists also. They raise a lot of alarms. What will happen if this thing happens? What will happen if this thing happens? But if your foundational strength is strong, if your foundation is strong, there is no room for you to worry. And India's foundational strength is so strong because it is based on truth. It is based on our Vedas, our Upanishads. Swami Vivekananda, almost 100 years before, he loudly proclaimed that Vedanta is the future religion of the world. And his prophecy is now almost coming to be true. Now people world over, they are realizing that Vedantic principles, Vedantic philosophies, Vedantic stories, they have to be an integral part of world culture. They have to be, because they are based on truth. They are based on eternal principle. So we as Indians have no reason to worry. As people become more and more scientific, as they become more and more logical, as they give more space to logic and rationalities, more and more Vedantic principles will become relevant. And such principles, such belief system, whose strength was only on the basis of forceful imposition, all those things will become things of past. So India was a strong nation because India's foundation was strong. And India will continue to be a strong nation. It will continue to inspire the whole world if we can be an instrument in the propagation of India's scriptural strength. And utilizing this opportunity, I would in fact appeal all my teachers and students to become brand ambassadors of India's scriptural strength. Get acquainted. First of all, acquaintanceship. We must know, we ought to know. If we ourselves do not know, then how we will propagate it? Our problem is that only when West starts speaking, then only we understand our importance. Only when the West says, then we believe. Otherwise, we are skeptical about our own strength. This is the result of 200 years of colonization. This 200 years of British rule, systematically they destroy our confidence. More than the physical enslavement, this mental enslavement which they brought about in 200 years, that was more harmful. And its roots are still not going away. The effect of colonization is still there. That is why there is so much of craze for Western things, for Western ideas. Otherwise, why is there craze for, say, convent schools? I do not understand. Even in villages also you will see there are convent schools. Something they will write and they will put at Saint Flower Public School, Saint Mary Public School. And they are not Christians. They are all hardcore Hindus. They have nothing. They don't know anything about Christianity. In remote villages I have seen many Saint Mary's, Saint Peter's, Saint something, some word and they put Saint in front of it. Why they are able to do that? Because there is craze amongst us. And why there is craze amongst us?
I regard it as a remnant of that colonization. It is still surviving. It should not survive, but it is surviving. What is our role in this? Our role should be that we first get acquainted with Indianness and India's cultural strength. And unless and until we acquaint ourselves, unless and until we know strongly about our roots, we will not be able to become an instrument in its propagation. So first of all, self-improvement. This verse of Bhagavad Gita, in fact, I like it very much. Uddhare atmanatmanam na atmanam avasate. Krishna says, the chief responsibility of your welfare lies on your shoulder, not on others. Others' role is very, very minimal. You can get some inspiration. But the primary role of your improvement, primary responsibility of your refinement lies on your shoulder, not on others. And once you realize that you are yourself responsible for your own refinement, then all possibilities get opened. When the responsibility lies on you, when you realize that what you are, it is because of you. You have chosen to be like this, that is why you are what you are. And this realization, this crude and brutal realization, will open up the opportunities in future. And as long as you hold somebody else responsible for your present status, the very possibility of growth is ruled out, or it is restricted in great way. So therefore, we ought to become responsible. We must own full responsibility for our present status. And then, having realized that we are what we are because of our choosings, because of our choosings of thoughts and actions, we have become what we have. Therefore, in future also, we can become what we want to become. By bringing about changes, we can fashion our destiny. We can evolve. And by the way, dear friends, refinement, own refinement, is the only thing that can be taken from this life to the next life if you believe in the continuance of soul. And by the way, all religions of the world, they are unanimous on this point. Of course, Mohammedanism and Christianity, they do not believe in reincarnation. But they do believe that after the physical death, you would continue to live. You would continue to live. The soul is immortal. In this, there is no dispute. All religions are one on this point, that soul is immortal. And if soul is immortal, if you continue to live after your physical death, then why don't we have some objectives? Why can't we think of something beyond present life? Why the whole humanity has become so myopic that we can't think beyond this life? Can't we set up some goals for ourselves beyond this life? We can and we should. And the goal is your own refinement. So refinement, your own refinement, your soul perfection, it is the only thing that can be taken from this life to the next life. There's a beautiful verse that Krishna says in Bhagavad Gita. He says, Tatra tam buddhi sanyogam labhate paurvatekam. Yatate chat tata bhuya sansiddhi kurunam. He tells Arjuna that the intellectual refinement
which you gathered in previous life, you will obtain in next life. And from there on, you would continue your journey. That's a beautiful verse of Bhagavad Gita. So it says that life is a continuity. And this 100 years is nothing. Swami Vivekananda somewhere says 100 years is nothing. If we are an eternal being, if man is an eternal being, then 100 years span of life is nothing. It is just like a drop. 100 years stands nowhere before eternity. So if we are an eternal being, then this life is not the be all and end all of life. We ought to have refinement as the constant to goal. So therefore, we all should put in great investment. In fact, all your investment, it is worth your while to invest your time, attention, money, energy in improving yourself. And in so doing, you become inspiring for others. You inspire others not directly, but indirectly. Think of a teacher who always reads, who's trying to improve himself or herself, physically, mentally, intellectually, skill-wise. Every day if you are learning new skills, then will such a teacher not be inspiring for his students? Only such a teacher will be inspiring for his students. And if a teacher who always talks about inspiring students, but who himself does not put in enough investment on his self-improvement, such a teacher will have a limited appeal amongst his students. So dear friends, on this occasion, since we all are living in our own world of thoughts and action, and teachers' thoughts and actions have a direct influence on students, therefore I would appeal to all my teachers to put in all your investment, make great investment on your self-improvement. Improve yourself physically, improve yourself mentally, improve yourself intellectually, and add more skills on you. Skills of music, song, dance. These skills connect directly with your students. And you must have witnessed the proof today itself, when Ishan was playing, or when these five or four girls, when they presented a medley of dance forms, we were all captivated. We were not captivated by the intellectual talks. Probably when I am speaking, you may not get that kind of connect, which you all instantly got when Ishan was playing some music, or when the girls were presenting medley of dance forms. Why? Because they were dance, skills, music, they are the language of heart qualities, and your mind qualities, your intellectual abilities and your heart abilities. And together they make you complete human being. So teachers, more than anyone else, teachers ought to have great heart qualities. In fact, all teachers must try to develop some skills in art qualities. Music, dance, all teachers. And in fact, if you are a physics and maths teacher, you need these things more than anyone else to give you to make you complete, a rounded human being. Otherwise, I tell you, this world of cause of action is such that we will have angularities in our personalities. And most adults are angular. I remember I met one principal who was from mathematics background. On a lighter note, I am telling you, and she believed that all other subjects are complete waste of time, and music particularly is a complete waste of time, and she would not mind even voicing her opinion openly, even in staff meeting, even in front of others.
oh, that music teacher is a waste of time, sir. He does nothing, she does nothing. And only every Sunday, every Saturday, there will be a workshop on mathematics. Because she believed that the whole world is only because of mathematics. Now this is an angularity in your personality. So if you have limited yourself to one direction, then in your personality the angularities will seep in. And very soon you will have angularities. And you will not be able to move smoothly in this world. That roundedness will go away. So to have complete roundedness, you ought to match your head qualities with your heart qualities. And also with your hand qualities, head, hand and heart. So if you have this roundedness, then you will see life in its totality. Life is actually a composite phenomenon. Otherwise you will succeed in one way, but in some other dimension you will be empty. You will have a hollowness. I am not able to play any musical instrument, and that's a hollowness. That's a cross that I am carrying. I did not have that much of opportunity in my schooling days, and in my family also. My family is a family of teachers, all very intellectual people, but no heart qualities. There is no one singer in my family, and nobody plays any musical instrument. And I desperately need that. That is why whenever I get such opportunities, I enjoy every bit of that. So you all have great opportunities in Kendriya Vidyalayas. And I am happy that Kendriya Vidyalayas do provide all such opportunities physically. We have all instruments, all good instruments. We have teachers who have gained a certain degree of proficiency in all these skills. So therefore I would request other teachers also to find time to pick up these skills, learn these skills, and make a completeness, obtain completeness in your life, so that you are able to enjoy every aspect of life, not just one aspect. You know, I once went to Ujjain. Ujjain, in fact, if you go there, Ujjain, you must visit Sandipani Ashram. In that Sandipani Ashram, all the Vidyas and all the skills, they are mentioned there. And it is said that Lord Krishna, he was master of all the Vidyas and all the skills. 16 कलाएं और 32 या 33 विद्याएं. हाँ, तो सारी विद्याओं और सारी कलाओं के वो महारथी थे, लॉर्ड कृष्ण. We don't learn from our icons, and we say that Krishna belongs to us. How can you have no right to claim that Krishna belongs to you unless you follow his footsteps? You just learned one skill and say that Krishna is yours. How? Your claim is bogus. If Krishna could master 16 art forms, then at least you master 10 art forms, and then you can claim that you are a descendant of Krishna, or you have something in common with Krishna. So let all of us resolve today that we will make substantial investment of time, attention, energy in improving ourselves. And then an idealist teacher is one who's an ideal teacher. Who's a good teacher? Forget about ideal. Who's a good teacher? A good teacher is, what is the answer? Who's a good teacher? A good teacher is a good student. A good teacher is a good student. And a good student is a good teacher. Because you learn best only when you teach. Dear students, I am telling you, you learn best when you teach.
Any concept that you want to learn, any mathematical theorem, any mathematical concept about which you have some doubt, you start teaching. Pick up your own friend and begin to teach him that concept. The moment you start teaching, he will also be benefited and your concepts will become very strong. So teaching is the best form of learning. And if teaching is the best learning, then the teachers must be the best learners because you are teaching always. And if you are not, then there is a question mark. And I want all of you to ponder on that question mark. Thank you and God bless you. Now, I invite Ma'am Susanna Pujur, Vice Principal, KB number 1 Bhopal, for the formal vote of thanks. Ma'am, please. नमस्कार। राष्ट्रध्वज को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की ओर से विद्या के इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का, विभिन्न केंद्रीय विद्यालय से आए शिक्षक साथियों का, अपने विद्यालय के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं का, कर्मचारियों का, क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए हमारे बंधु बांधवों का, अभिभावकों का, छात्र छात्राओं का, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी गणमान्य सहभागियों को तथा छात्र छात्राओं को 73वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं इन पंक्तियों के साथ प्रेषित करती हूँ। हम उस देश के नागरिक हैं जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा है, सत्यमेव जयते जहां का नारा है, वो भारत वतन हमारा है, वो भारत वतन हमारा है। सर्वप्रथम मैं देश के उन वीर सपूतों के प्रति श्रद्धान्वित हूँ जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त आजाद भारत में मस्तक उठाकर स्वतंत्र भारत में विचरण कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रांगण में पधारे सम्माननीय श्रीमान सोमित श्रीवास्तव, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल संभाग का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार कर हम सभी को कृतार्थ किया तथा तिरंगे को सलामी देकर देश के प्रति प्राणों को आहुति देने वाले वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में लिखा वो दिन रहा जिस दिन भारत ने अपना नया इतिहास लिख डाला, अपना नया विधान ही बना डाला। इस बात का प्रमाण दिल्ली के लाल किले पर लहराता तिरंगा है, जो आज अपनी पूरी आन बान और शान से लहराते हुए ये खुशबू बिखेर रहा है। गणतंत्र हमारा महान है, आकार में बड़ा है, हर सवाल का जवाब है, संविधान इसका संचालक है, हम सबका पालक है, लोकतंत्र जिसकी पहचान है, हम सबकी शान है, गणतंत्र हमारा महान है, गणतंत्र हमारा महान है। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन के साथ साधुवाद ज्ञापित करती हूँ।
जिनकी ममतामयी उपस्थिति ने विद्यालय की गरिमा को द्विगुणित किया है। मैं विद्यालय के प्रमुख प्राचार्य श्रीमान सौरभ जेटली, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने कुशल निर्देशन के द्वारा इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षकवृंद, विद्यालय के कर्मचारी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रभारी, विभिन्न फोटो कहते हो काम कर जाता हूँ।